Hey guys, wishing you a very happy Father's Day. And today on this special occasion, I have my wonderful, beautiful daughter. Hi guys. That's Hiya Chaudhary. Hello. And today we are cooking together a beautiful recipe which is somehow very close to our heart because this was the first recipe that we cooked together. And we have some good memories of that cook-off. Let's begin. So will you explain what we are doing today? We are creating watermelon jam. So watermelon jam is somehow very close to my heart because happens to be watermelon jam एक ऐसी रेसिपी है जो सिर्फ वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट नहीं बट उसका ग्रीन वाले पार्ट को भी यूटिलाइज करती है और वो चीज़ को वेस्ट नहीं होने देती और हम उसका बेस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाते हैं. इसमें से हम जितने सीड्स निकाल सकते हैं उतने सीड्स निकाल लें. सिमिलरली ये जो पार्ट है हमने बहुत केयरफुली इसका एक पतला ग्रीन स्किन निकाल दिया और इसको हमने ग्रेट कर लिया. सो वी हैव दिस ग्रेटेड मटेरियल राइट हियर. किसी भी जैम की फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है जिसे हम पेक्टिन बोलते हैं. पेक्टिन वो कंपाउंड होता है जो कि पानी को होल्ड करता है और एब्जॉर्ब कर लेता है. वो एक जेली टाइप मटेरियल कन्वर्ट करने में हेल्प करता है किसी भी जूस के फॉर्मेशन में. सो जनरली सिट्रस कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा होता है. वही एक कंपाउंड है जो जैम या जेली बनने में हेल्प या सपोर्ट करता है. कमर्शियल जैम्स में शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और शुगर के अलावा इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्रूट फ्लेवर्स यूज़ किए जाते हैं जो शायद बहुत हेल्दी नहीं होते ना आपके लिए, ना आपकी सेहत के लिए, ना आपके बच्चों की सेहत के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैम्स जनरली यंगर जनरेशन ज़्यादा यूज़ करती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अगर घर पे इन जैम्स को बनाएं इट विल बी ग्रेट टू डू दैट. So, ये जो हमारा बचा हुआ वाटरमेलन है जो कि कम्प्लीटली सीडलेस है, मैंने इसको चॉप कर दिया है और मैं इसको भी फर्दर इसी जैम में ऐड कर रहा हूँ. That's it. Why are you doing this manually? Wouldn't it go faster if we did it in like a mixer? Absolutely, but seeds का क्या होगा? Seeds will as well get minced up और उसका जो एक हार्ड मटेरियल है वो जैम में मिक्स हो जाएगा और वो आपको कहीं ना कहीं इच करेगा. हम इसमें पहली चीज एक लेमन का हल्का सा राइंड ऐड करेंगे. ये फ्लेवर ऐड करेगा. द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज We take a lemon, इसको हमने काट दिया, add a little lemon juice जो कि इसकी पेक्टिन की क्वांटिटी को बढ़ाएगा. By the time I finish this, why don't we start with your setup? Sure. So today I was hoping to bake some cookies with my father here. So here we have some all-purpose flour, some melted butter, brown sugar, white sugar, chocolate chips, salt, vanilla essence and some baking powder. So we'll start with the sugar and the butter, mixing the sugar and the butter together.
My dad, I remember that my dad always used to cook, one day in a week, Sunday. That was our special day, and he used to cook food for us. He was a wonderful cook, and probably I think my mother is an equally good cook. But my mother was a vegetarian, so all the meat dishes, all the non-vegetarian food was prepared by my father in my younger days. At this stage, we will add some sugar to it. 1 किलो के मिक्सचर में अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम के करीब शुगर जाएगी. डिपेंड्स ऑन कि आप फ्रूट कौन सा ले रहे हैं, उस फ्रूट में अपनी कितनी शुगर है, इसमें भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपको शुगर कितनी डालनी होगी. This looks nice. Looks quite tasty. Now we will add the flour. Okay. And some salt. What do we do now? Now we put it in the oven. And the cookie will look like, that's very nice. And there we go with our jam. It looks nice, very rustic as I like it. Now that the jam and the cookies are over, I'm just going to pull my mom in so that she can still taste it. Thank you so much. That looks delicious. Now I'm going to taste this first. I hope you like it. Delicious. My Sunday is sorted, but how was your Father's Day? I hope you had a good time as well. Please do mention in the comment section. You may watch this complete video on my YouTube, and looking forward to your feedback that what do I cook next. See you soon.